Hello my dear students, so today we have come up with question number 4, 5, 6 of exercise 12.1. Okay. पहले वीडियो में 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6. So let's start. So a cubical block of side 7 centimeters surmounted by a hemisphere. Okay. So the diagram is not given. हमें diagram बनाना पड़ेगा. पहले भी जिसमें मैं diagram बना के मैंने बताया था by a hemisphere mounted या mounted on a hemisphere वो कैसे होगा. फिर से let's revise. One object is mounted by another object B, this A, and A is mounted on B, by B on B का मतलब क्या है? A is mounted on B means B के ऊपर A है and A is mounted by B means A के ऊपर B. Done? ये मैंने पहले वीडियो में बताया था. Now here is a block is of side 7 centimeters surmounted by hemisphere 7 centimeter. Okay, means all sides are equal. In a cube all sides are equal. तो length breadth height सारा हमारा 7 है. The block is surmounted by a hemisphere. Surmounted by a hemisphere means block के ऊपर हमारा hemisphere है. Okay. ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर मीन्स ब्लॉक के ऊपर हमारा क्यूब है, सॉरी हेमिस्फीयर है. नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब ये सॉलिड का सरफेस एरिया कितना होगा? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव. सबसे पहले हमें निकालना है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव. तो अच्छा, द अपर पार्ट ऑफ द block will look like this. Shape upper part अगर खाली देखेंगे it will be the shape of a square. Now here the hemisphere is there. Okay, hemisphere है. So one thing you can check or you can do any activity with your एक square paper ले लो, वहाँ पे एक circle काट के उसके ऊपर डालो. So this space cannot be covered by this hemisphere. ये स्पेस खाली रहेगा हमारा. ओके, सो हेमिस्फीयर विल ओनली टच द एजेस. एक कॉर्नर का वो एज वो टच करेगा, ये 4. बाकी क्यूब का कॉर्नर्स विल बी नॉट टच्ड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. तो डायमीटर का मीन्स द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द सर्कल. वहां सर्कल का डायमीटर ग्रेटेस्ट वाला कौन सा होगा? Obviously this one. Okay, this is the greatest diameter from one edge, means one edge of the cube to other edge. It is touching, so touch कर रहा है, so it is the greatest diameter. Therefore, the greatest diameter, first we will write. पहला क्वेश्चन जो है the greatest diameter, उसके बारे में लिखेंगे. The greatest diameter of the hemisphere is 7 centimeter. That is the side of cubical block. Block. Okay, done. So the greatest diameter will be the side of the cubical block. Now we need to find the surface area of the solid. Surface area means the parts which are visible, the area which is visible to us. क्या क्या visible है हमें? This front and this back and this right and this left here, one left. This is front or back or the lower one. Okay. So two राइट लेफ्ट राइट वाला है,
प्लस 2 हमारे फ्रंट एंड बैक प्लस 1 लोअर, ओके बेस। ना अपर साइड का ये है, अपर साइड का सरफेस एरिया दिस मच ओनली, so it is touched this much only, ठीक है, एंड दिस कॉर्नर विल बी लेफ्ट, ये कॉर्नर नहीं होगा। सो द सेम सिचुएशन आई हैव डिस्कस्ड previously, that the surface area, how to find out, फर्स्ट क्यूबिकल ब्लॉक का हमारा है क्यूब, नाउ हेमिस्फीयर का diameter is 7 centimeter, therefore radius will be 7/2, that is 3.5 centimeter, या 7/2 ही रखने से इजी होगा, y 22/7 रहेगा तो कैंसिलेशन इजी हो जाएगा। therefore the surface area of the solid, the surface area of the solid will be क्या हो जाएगा, टोटल surface area of first that cubical block, पहले टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल में से ओनली द अपर पार्ट हमारा ये वाला विजिबल है, सारा नहीं है, मीन्स टोटल सरफेस एरिया में ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, हमारा पूरा स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा, उसमें से सर्कल हम माइनस कर देंगे तो रेस्ट पार्ट हमें मिलेगा, माइनस एरिया ऑफ, सर्कल नहीं लिखेंगे, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस दैट इज सर्कल ब्रैकेट में प्लस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो कि सर्कल के शेप में होगा, प्लस ऐड क्या करेंगे तो इसका क्या फॉर्म, इसका क्या सरफेस एरिया हो गया, ऑल पार्ट, क्यूबिकल का ऑल पार्ट और अपर का ये जो लेफ्ट पार्ट निकल गया। नाउ इसमें इन द प्लेस ऑफ सर्कल देयर इज ए हेमिस्फीयर, सो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया दिखेगा हमें, यस और नो, ये जो एम्प्टी स्पेस है वो दिखेगा और कर्व सरफेस एरिया हमें दिखेगा। सो ऐड क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, बिकॉज बेस हमें विजिबल नहीं है, सो CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ पुटिंग द वैल्यू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल block that is 6a square, side square, directly we can write 6, what is the side, 7 square, minus area of base of hemisphere, base area of base means circle, that is pi r square, r is 7/2 square, plus curved surface area of hemisphere कितना है, 2 pi r square, 2 pi r square means 7/2 r square, that is centimeter square। 7 square is common, अगर 2 square भी कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर देंगे, let's take 7/2 whole square common, यहाँ पर क्या बचा 7/2, 7 square चला गया, 4 2 square means 4 एक्स्ट्रा है, so 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 4 माइनस, क्योंकि कैंसिल होने के बाद 7 square ही रहेगा ना। नाउ हियर पाई लेफ्ट प्लस यहाँ पर 2 पाई, नाउ 7/2 होल स्क्वायर, ये हो गया 6 4 24 माइनस ये प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई, दैट इज प्लस पाई, दैट इज 22/7। नाउ 7/2 होल स्क्वायर 24 प्लस 22/7, क्या बचा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एलसीएम लेंगे तो नीचे 7, ऊपर में 7 4 28 168
22 0 9 190. Now 2 8s are 60, 2 9s are 18, 2 5s are 10. The answer will be in the decimal form, that is 95 into 7 by 2. 95 7 66 divided by 2. It will be 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10. That is 332.5 centimeter square. 332.5 centimeter square. Now the next question is, a hemispherical depression is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Means depression cut हो रहा है, means one depression of hemisphere shape will cut from a cubical wooden block. This is the cubical block given. ठीक है, ये दिया गया है. यहाँ से एक डिप्रेशन करेंगे. डिप्रेशन मीन्स विल कट द शेप. ये सॉलिड है. सॉलिड में से हमें हेमिस्फीयर शेप्स का ऊपर से हमें यहाँ पर काटना है. ओके, सच दैट द डायमीटर L, it is the L, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. मीन्स यहाँ पर ऐसे कट करना है. यहाँ का फेस जो हेमिस्फीयर का बेस होगा, हेमिस्फीयर का जो बेस होगा, द डायमीटर विल बी इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. मीन्स this will be the hemisphere cut. Done. And now determine the surface area of the remaining solid. Remaining means solid cube से cut कर दिया. What is the remaining solid? Means same, the all cube का all side visible है except top. टॉप का क्या विजिबल होगा मेरा? लाइक दिस सेम. पहले क्वेश्चन में जो किया वही. मीन्स ये कॉर्नर वाला पार्ट हमारा विजिबल नहीं होगा. ठीक है, वो टच करेगा एज को. ओके, द कॉर्नर पार्ट विल नॉट बी विजिबल. मीन्स सेम क्या, टोटल सरफेस एरिया करना है हमें. टोटल सरफेस एरिया माइनस वो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. बिकॉज डिप्रेशन मीन्स हमें कैसे दिखेगा ऊपर से, हेमिस्फीयर एक कट है नीचे से. सो द हेमिस्फीयर विल लुक लाइक ए बाउल. बाउल जैसे दिखेगा. बाउल का क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया. बिकॉज द बेस इज एक्सक्लूडेड, इट इज नॉट विजिबल टू अस. बेस तो हमारा कट है नहीं है, तो ना ही वो क्यूब का होगा, ना ही ये हेमिस्फीयर का बेस होगा. ओनली द कर्व सरफेस एरिया. अगर डिप्रेशन भी है तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा. ओनली इफ डिप्रेशन ऑल्सो, देन ऑल्सो द कर्व सरफेस एरिया. एंड अगर ऊपर में टॉप में एनी हेमिस्फीयर इज पुट, देन ऑल्सो कर्व सरफेस एरिया. नाउ वी विल राइट अबाउट द हेमिस्फीयर डायमीटर. हेमिस्फीयर में is cut from a the diameter L of the hemisphere is equal to the edge. Means diameter equals to the edge of cube, that is side of cube, that is L centimeter. Okay, and now what is the cube का साइड कितना है मेरा? It is equal to the edge, that is L. Okay, so it is depression is cut from one face of a cubical wooden block such that the diameter L
of the hemisphere equal to the edge of the cube. So diameter भी L है और वहां से हमारा रेडियस निकल जाएगा, that is L/2, and हमारा साइड कितना दिया है, that is also L. Done. Now we will find out the surface area. Therefore, the surface area of the remaining solid is equals to total surface area of cubicle then minus area of base of hemisphere plus the curved surface area of hemisphere. So total surface area is of the cubicle is 6, side is L, that is L square, minus base का है पाई, r कितना है L/2 का स्क्वायर, माइनस a plus curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r square, that is L/2 का square. Then 6L square minus pi L square plus 2 pi L square. L/2 का स्क्वायर ले लेंगे तो पाई भी ब्रैकेट ले लो, क्या हो जाएगा ये पाई माइनस 2 पाई L/2 यहाँ से L/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा पाई, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट बाहर में साइन माइनस है और ब्रैकेट डाल तो अंदर का साइन चेंज हो गया, क्या बचा 6L स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर हो गया -5. सो दैट इज 6L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पाई L square by 2. So the answer will be L square 6 plus pi by ओपन ब्रैकेट ना यहाँ 4 हो जाएगा बिकॉज ब्रैकेट ओपन किया पाई by 4 is the required surface area of the remaining solid. तो लास्ट में हमें one sentence we need to add, therefore the surface area फिर से हमें लिखना है, okay, area is this much. Done. Now the next question is medical capsule is the shape of a cylinder. This is the capsule है and it is the shape of a cylinder, okay, stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. ठीक है, एक कैप्सूल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक कैप्सूल है जो सिलेंडर के शेप में है, ओके. देन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, मीन्स एंड में, दोनों के एंड में क्या स्टक है मेरा हेमिस्फीयर, दोनों के एंड में क्या स्टक है हेमिस्फीयर स्टक है, ठीक है. ये हेमिस्फीयर तो स्टक है और बीच में सिलेंडर है तो इसका शेप इट विल लुक लाइक दिस ओनली ना, इट विल लुक लाइक दिस. लास्ट में ये स्फीयर जैसे रहेगा हेमिस्फीयर जैसे एंड बीच में वो सिलेंडर होगा स्ट्रेट. नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया. व्हाट इज द सरफेस एरिया? देखो हेमिस्फीयर का बेस नॉट विजिबल टू अस बिकॉज वो स्टक है, उसके बाद सिलेंडर का भी बेस विजिबल नहीं है, फिर यहाँ पर भी हेमिस्फीयर का बेस हमें विजिबल नहीं है. तो क्या है यहाँ पर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है और यहाँ पर हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है बिकॉज बेस इज नॉट इंक्लूडेड. सो पहले लिखेंगे सिलेंडर
diameter will be equal to diameter of capsule, that is 5 millimeter. Okay, this is the 5 millimeter. यहाँ पर सोचो एक कट होगा, यहाँ पर भी एक कट होगा. Cut means from here the hemisphere is joined to us and from here the hemisphere is joined. और बीच में हमारा ये है सिलेंडर. ओके, ठीक है. तो हेमिस्फीयर का रेडियस डायमीटर हमें दिया है 5 मिलीमीटर. तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वही हेमिस्फीयर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा. ओके, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वही डायमीटर हमारा सिलेंडर का हो जाएगा. देयरफॉर द रेडियस विल बी 5/2 millimeter. Now height, we need height also curved surface area के लिए. What is the height? 14 millimeter total है हमारा. This is the total. But we need this one only. मुझे ये चाहिए. ये कैसे निकलेगा? Total माइनस, अगर ये दो हेमिस्फीयर का लेंथ अब माइनस कर देती हूँ तो मेरा हाइट ऑफ द सिलेंडर निकलेगा. अभी हेमिस्फीयर का लेंथ मीन्स देखो, दिस इज द रेडियस ना. रेडियस इज सेम फॉर इच केस. ये रेडियस तो सेम होगा. तो द लार्जेस्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का हाइट जो है वही हमारा रेडियस है इक्वल. सो माइनस एक यहां पर है और एक यहां पर है 2. सो 2 इंटू what is the radius? 5/2 मिलीमीटर. ठीक है, कैंसिल हो गया. Why 2? बिकॉज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी. एक का हमारा 5/2 है, दोनों का इंटू 2 करेंगे, ये कैंसिल हो गया. क्या बचा? 14 minus 5 will be 9 millimeter. Done. Now we will go for the hemisphere. हेमिस्फीयर का क्या है? रेडियस इज 5/2. ओनली रेडियस चाहिए हेमिस्फीयर में. देयरफॉर द सरफेस एरिया, देयरफॉर द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर plus 2 into curved surface area of hemisphere, that is 2 pi r कितना है? 5/2. h is 9 plus 2 into hemisphere का 2 pi r square. 2 into pi r है 5/2 square. Now 1 2 pi 5/2 can be taken common. क्या बचा यहाँ पर? 9 बचा प्लस 2 pi 5/2 चला गया. एक 2 बचा, एक 5/2 बचा, कैंसिल. 2 into 22 by, ये कैंसिल हो गया. कैंसलेशन, that is 22/7 into 5 into 9 plus 5, 14. 14 2s are. Then 2 5s are 10 into 22. 220. It is millimeter square. Okay, therefore the surface, लास्ट में ये लिखना है, एरिया ऑफ capsule is 220 millimeter square.